Beautiful, bold and sexy. Hello everyone. Social media star Qandeel Baloch challenged conventions and shocked a nation. सोचते उनको सोचने दो, मुझे लोगों की परवाह नहीं है. But in the strict Muslim country of Pakistan, a woman's actions can have fatal consequences. छोटी छोटी बातों पे मतलब लड़की लड़के से बात कर ले तो लोग कत्ल कर देते हैं. हर एक माह के बाद कोई ना कोई भाई बहन को मार देता है. Over 1,000 women are killed every year for bringing dishonor on their families. This is the story of how one girl's murder shed light on an issue plaguing an entire nation. दोस्त नहीं बल वो जिगर. Pakistan is one of the world's leading Muslim nations. It aspires to be a modern democracy, but in many ways it remains a deeply conservative society. When these worlds collide, it's women who pay the price. Strict interpretations of religious rules combine with harsh tribal customs to demand that women know their place. Asma Jahangir is one of the country's top human rights lawyers. Honor killings have been in this country for a long time. It takes place in all parts of the country. It's not just in remote areas. It started with a feudal background and a feudal mindset. So-called honor killings, when a woman is believed to bring so much shame and dishonor on her family, she is murdered. Honor killings do take place all the time, and not only in this country. If you look at Jordan, you look at Egypt, you look at Turkey, in the east of Turkey, this has been prevalent for a long time. In much of Pakistan, women can be all but invisible. Yet one young woman was determined to stand out. कुछ ऐसा करूंगी कि लोग परेशान हो जाएंगे. In 2015, model and singer Qandeel Baloch became Pakistan's biggest social media star. A brief rise to fame through the unregulated platform. Journalist Amber Shamsi remembers when Qandeel first burst onto the scene. This is a video of her singing, and she's wearing a very sort of goddess-like Grecian dress, and you can see her legs. She's singing the song of another really popular pop singer. The thing about Qandeel was that, she kept you interested. You never got bored. पाकिस्तान में अगर देखा जाए ख़वातीन में अगर किसी ने सोशल मीडिया का भरपूर फायदा उठाया है और कौम को ख्वार किया है तो कंदील बलोच. A performance on Pakistan Idol first threw Qandeel into the spotlight. सिंगिंग का मुझे बहुत शौक है. शौक क्या बल्कि मुझे पैशन है. So the Pakistan Idol audition was 2013, and that was also, it went viral as well. And the reason was, she was wearing these clothes, and she had a very big personality. And she didn't take the criticism from one of the judges very well, and she threw a bit of a tantrum, and her voice wasn't very good. And she was incredibly memorable. She had charisma, she had something. But Qandeel didn't dwell on the judge's rejection. She hired an agent, Mac Khan, who guided her on her quest for stardom.
तो वो उसको कहती थी कि सबसे बड़ी मेरी गलती ये थी कि मैंने ये प्रोग्राम कर लिया, और जिसकी वजह से मेरी सिंगिंग कैरियर में एक वो आई। When she failed to break through on mainstream media, Qandeel turned to the internet for self-promotion. How I'm looking? Tell me how I'm looking. Marvelous, Just marvelous. extraordinary. इत्फाकन ऐसे वो बैंक से पैसे निकलवा रही थी, तो कहती चलो अपनी वीडियो बनाते हैं। Extraordinary. A throwaway phrase grabbed the country's attention and turned Qandeel into an online sensation. उसको फेसबुक पे डाल दिया, दो बड़ी दुनिया में कॉमन हो गए, उसकी पैरोडीज बन गई, तो वो 4-4.5 लाख उसकी लाइकिंग आ गई। Beautiful. In the beginning, it was the absurdity of it. We couldn't see any discernible talent except for the fact that she was good looking and she was okay with being out there and sexy and funny. Hot tea. बहुत तेज टेम्परेचर हो रहा है मुझे इस टाइम पे। She did represent this change in Pakistan, and the change is obviously because of smartphones and the internet. When you go outside of urban areas, you see less women outside in public spaces, but they do have their mobile phones, means they are on social media. This is a change that's been happening in Pakistan over the last 3 years, and Qandeel kind of represented the good and the bad of it. But Qandeel was also beginning to cross the boundary of what is deemed acceptable behavior for a woman in Pakistan. अगर इस दफा 18 मार्च को होने वाले मैच में पाकिस्तान अगर इंडिया को हरा देता है तो मैं पूरे मुल्क के लिए स्ट्रिप डांस करूंगी। इतनी ज्यादा ये कंट्रोवर्शियल आप अपने आप को क्यों बना रही हैं? I mean, ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने अपने आप को Striptease की कंट्रोवर्शियल जब बनाया? मुझे तो आई स्वेयर टू गॉड मुझे पता ही नहीं होता कि मैं जो करती हूँ वो तो अपने दिल से करती हूँ, मेरा दिल करता है मैं कर देती हूँ। मैं उस चीज़ को ये सोच समझ के बिल्कुल भी नहीं करती कि वो कंट्रोवर्शियल हो जाए या मैं फेमस हो जाऊँ या इस तरह से हो जाए। I did have objections to the fact that she used her body. That's not what women should be about. But again, as a feminist, I admired the audacity for her to, she made her choices. She was very clear about them. She wasn't a hypocrite. She certainly was not a hypocrite. एक्चुअली वो बेसिकली तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी और वो चाहती थी कि मैं अपना जो टैलेंट वो दिखाऊं, लेकिन मीडिया ने उसको नेगेटिव तौर पे इस्तेमाल किया उसको ना, मतलब उसका जो पोटेंशियल था, जो उसमें टैलेंट था, उसको तो प्रॉपरली उन्होंने ना उसको पेश किया और उसको एक एज ए ग्लैमराइज्ड और एक बड़ी बोल्ड किस्म की उसको ना सोसाइटी में पेश किया। Qandeel's behavior infuriates some of Pakistan's religious conservatives, who believe women should always be modest and never show their bodies in such a provocative way. And it had become a topic of debate on a national news channel. मैं आपको ये बात बतलाना चाहता हूँ कि ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, यहाँ मुसलमान रहते हैं, यहाँ का कल्चर मगरिब और दूसरी जगह से बड़ा मुख्तलिफ है। From national TV to Twitter, Qandeel also began receiving a torrent of abuse online. मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और बिगड़ी हुई लड़की हूँ, ठीक है। मुझे इससे पहले अगर पूरा रिकॉर्ड चेक करें, स्ट्रिपटीज से पहले, ये ट्रेलर से पहले अगर देखें, मैं कुछ भी नहीं करती थी, सिर्फ फनी वीडियो बनाती थी, सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए। उससे पहले भी मुझे इतनी गालियां पड़ती थी कि वाई मैं समझती थी कि मैंने क्या किया है। The more Qandeel defends herself, the more she seems to divide the nation. को कौन गालियां दे रहा है? अवाम, पब्लिक, हेटर्स। बट मुझे परवाह नहीं है, जब इतने ज़्यादा हेटर्स हैं तो मुझे चाहने वाले लोग भी बहुत हैं, प्यार करने वाले लोग भी बहुत हैं, प्यार करने वाले लोगों की कमी नहीं है।
As the controversies increase, Qandeel is invited onto a talk show with religious cleric Mufti Kavi, who's well known for his clashes with young modern women. One of the favorite themes in local media channels to get ratings is the model versus the mullah. And it's been done a lot of times before. So with the striptease, obviously Pakistani media channels now wanted her to confront mullahs, and one of their favorite mullahs to invite was Mufti Abdul Kavi. The network censors Qandeel's pictures. They are deemed to be too inappropriate, and the presenter challenges her about them. आपको कोई शर्मिंदगी है उस पे कि आपने जो काम किया आपको नहीं करना चाहिए था? मुझे ये बताएं, बिकनी पहनना कोई गुनाह है? बिकनी तो पहनी हुई है, तो नहीं हूँ ना, मैं तो नहीं हूँ। अगर मोहतरमा कंदील साहबा ये समझती हैं कि उनकी कोई तस्वीर ऐसी है जो वो अपने बच्चों के साथ बैठ के या अपने वालिद साहब के साथ बैठ के या अपने भाई के साथ बैठ के। Despite his disapproval, the mullah seems oddly keen to get to know Qandeel better. आप कराची में होती हैं? जी मैं कराची में होती। तो इंशाल्लाह मुलाकातें होंगी। जी जरूर। When Qandeel and Kavi met, this is when things, I think personally, that's when things took a darker turn. It wasn't so funny anymore. This meeting would trigger a chain of events that would end in Qandeel's death. Social media star Qandeel Baloch divided a nation. Her videos provoking excitement and animosity in equal measure. And Qandeel was all too aware of the expectation traditional Pakistan puts on its women. She grew up in the tiny village of Shah Sadardin, one of the most conservative and poorest areas in central Pakistan. People here scratch a living from subsistence farming, and Qandeel's elderly parents, Anwar Bibi and Azim Khan, are no different. बचपन में अच्छी थी, पढ़ण दा को बहुत शौक आ। पहले अपनी पढ़ाई दा को बहुत शौक आ, पढ़ाई कने विली थी बावया टीवी देखया। गाने दा शौक भी हा, कोई शाजा माजा जो थी वेना ता बच्ची जब बड़ी बड़ी थी ये जो बच्ची बचपन कने को शौक आ। सच 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 पर डांस करे नहीं तो लगे ना को चंगे रंग के शोर वगैरह जो लगे ना चंगे और इन झलक दिल करे ना उनसे ज़्यादा दिल। At first, Qandeel seemed destined for the conventional life of a young girl in rural Pakistan. असम बलोच है ना, बिल इतना ज़्यादा बिल नहीं से। शादी उनकी कर दी थी, ऐसे छोटी उम्र आई चाहिए, हो सी 13-14 साल दी, खुश ना है उनका नाम। हाँ एक दिन आई है ना, ये माँ को ना कि मामा को बिजली करंट लगे, मैं कोई पता नहीं लगा, इन्हीं को किया, माँ को हालात ये पीछे कि बाप तो बंद। Such is the importance of family honor that Qandeel's mother tried to make her return to her abusive husband. राने ना पा बंजा रखे ना उनकने वो तंग आ गई है, साकु दसेंदी बेली में मनल सख्ती करने ऐसा है कि बेटा तेरा अपना घर है तू गुजारा कर, असम बलोच है बदनामी है साड़ी, तू गुजारा कर। Breaking with tradition, Qandeel decided to make an escape. मौका जो मिले ना, विराट को नटकान ला मैं माँ निकला तो, अम्मी अब्बा चलना नहीं, पर मैं अपना मुंह के जैसे कहीं पाते, कल्ली ना कोई होर कोई ना। Unwilling to submit to cultural traditions, Qandeel's strong personality would shape her future. मुझे डिफरेंट नज़र आती है कि एक तो वो बहुत ज़्यादा पैशनेट थी अपनी कैरियर के बारे में कि मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ, और उसके लिए फिर वो एक डिटरमिन्ड थी कि मैंने ये करना है तो मैंने ये करना है। Qandeel saw social media as a ticket out of poverty and a way to make enough money to support her family. हमारे मुल्क में तो वैसे भी इतने वो है ही नहीं, वेज ही नहीं है यहाँ,
और जैसे कोई लड़की अपने घर से आती है उसको हम रॉन्ग वे में उसको करते हैं और बहुत ज़्यादा सोसाइटी उसको डिस्करेज भी कर रही होती है, इंजॉय भी कर रही होती है, डिस्करेज भी कर रही होती है. So this is material that I got from a friend of hers. So this is PTV, this is a drama she did. क्या है ये? What is this? सर को बता दीजिएगा. Actually did come in a few dramas, she had some modeling gigs, bit of singing here and there. But I think she wasn't getting the kind of fame she wanted as quickly as she wanted in the way she wanted it to be. Amber Shamsi was one of the few journalists to interview Qandeel before she died. In this interview, Qandeel talks about why she turned to social media. आपको पता है कि शोबिज़ में किस तरह से लोग होते हैं, वो लड़कियों को किस तरह से मिसयूज़ करते हैं और किस किस तरह की ऑफर्स होती हैं और क्या क्या बोलते हैं कि पार्टीज़ में आओ, ये करो, वो करो. इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे इस तरह की बात करे, बट इनडायरेक्टली मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस तरह से फेस किए. तो वो उन चीज़ों से डिसअपॉइंट हो के तो फिर मैंने सोशल मीडिया का इंतखाब किया. Qandeel also directly addressed the risk she was taking. बलोचों का इमेज चेंज कर रही हूँ मैं. बलोच लोग भी ऐसे हो सकते हैं तो अच्छी बात है. बलोच लोग कितने बदनाम है कि गैरत के नाम पे कत्ल करते हैं, ये होता है, वो होता है, औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, और लिटरली ऐसा होता है हमारी फैमिलीज में. If Qandeel was already receiving negative comments from the Pakistani press, meeting a religious cleric in private would stoke the flames. Soon after their television interview together, Qandeel and Mufti Kavi arranged to meet in a hotel room in Karachi. So guys, आप लोगों को पता है कि मैंने मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब ने मुझे बहुत बुलाया. I mean, जब चांद देखने के लिए आए थे तो उन्होंने मुझे. Qandeel films herself teasing the Mufti. He is too good. Oh my God, I can't believe कि ये कितने अच्छे हैं. मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मेरे यहाँ तशरीफ लाई. These images of Qandeel and the cleric were soon broadcast on every news channel. When I saw those images, you know, he's sitting there smiling. I said, well done, Qandeel. You know, you've shown his true face. Qandeel then goes on national television to claim that the Mufti had gone further than offering spiritual advice. बिल्कुल ऑफर की. मैंने आपको बोला है, he tried a lot and he said कि 17 निकाह किए और 18वां निकाह मैं आपसे करने के लिए तैयार हूँ और उसके बदले में आपको जो कुछ चाहिए होगा मैं आपको दूंगा. और वो The embarrassed cleric insists he has done nothing wrong. ना मैंने इनके लिए अपने हवाले से निकाह की बात की है, ना मैंने अपने हवाले से शादी की बात की है. इन्होंने अपने खानदान के हवाले से बताया कि मैं फलां कॉलोनी में रहती हूँ और मेरे वालिद साहब की ये कैफियत है. फिर उन्होंने कितने झूठ बोलेंगे मुफ्ती साहब. आप बस कर दो. Humiliated on national television, Mufti Kavi was then dismissed from a prestigious religious committee. उसको मतलब रोती हिलाल कमेटी से निकाल दिया है कि मुझे एक तरफ से दुख भी हो रहा है, एक तरफ से मुझे मतलब अच्छा भी लग रहा है कि अच्छा होगा उसके साथ. Following the controversial Kavi incident, the national media published an image of Qandeel's passport, revealing her real name, Fawzia Azim. Naming her meant shaming her, making her and her family targets. Women are progressing in this country. Women have aspirations and women have advanced. They are far more liberal than society wants them to be. And so they are under threat all the time. And it is mostly young men, it's the brothers. Obviously are chastised by their peers that what is your sister doing? Qandeel's younger brother, Wasim, begins to receive insults from the local community about his scandalous sister. हाँ गाँव वाले बाहरों बन ना था वसीम को आखे ना मेरी तुसन दल्ले ही वे तुसन बेगैरती वे शोशाई पा लीता गाँव ते थाई पीछे निंदा इंटरव्यू था ना रमज़ान शरीफ है कंदील ते मुफ्ती कवी दा उठाओ बेली ना था आपते झगड़ा. Safdar Shah, the parents' lawyer, has learned that Wasim's older brother, Aslam, warned the family that things were getting out of hand. असलम से कहता रहता था कि मैं अब गुस्से में हूँ, मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि मैं सियासत दर्दीन में हूँ. यहाँ तो लोगों के ताने मैं सुन रहा हूँ
फिर असलम जो है ना अपने वालिद और वालदा को बताता था, इसने कंदील को भी बता दिया था कि ख्याल करें कि वसीम जो है ना वो गुस्से में है, नुकसान भी कर सकता है वो। Her brother's shame grows, while the threats of violence against Qandeel increase. I swear, मुझे इतने ज़्यादा थ्रेट्स आ रहे कि मेरी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी से सुकून चला गया है। मुझे मेरी रातों की नींद उड़ गई है। आपको किसने कहा था मुफ्ती के कमरे में जाएं, उसकी कैप पहने, उसके साथ वीडियो बनाएं? वो मुझे जो बेहतर लगा मैंने कर दिया, बट उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अब डिफरेंट तरह से थ्रेट्स आ रहे हैं। मुझे कभी अफगानिस्तान से कॉल आ रही है, मुझे कभी मेल्स आ रही है, मुझे व्हाट्सएप कॉल आ रही है। मेरा क्या कसूर है? In genuine fear for her life, Qandeel runs to the one place she thinks she will be safe, back home to her mother. परेशान है डेली कपड़े अपने में सीधे साधे ना तना पहनी सीधे साधे इनमें सीधे साधे बलोच के कपड़े पाकने चादर लपेट कने मुंह वलहेट कने आइए जिमें डार कने खौफ कने आइए। Splashed on the front pages of newspapers and forced to defend her behavior on national TV. Beautiful, bold, and sexy. Hello everyone. Social media star Qandeel Baloch challenged conventions and shocked a nation. सोचते उनको सोचने दो, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। But in the strict Muslim country of Pakistan, a woman's actions can have fatal consequences. छोटी छोटी बातों पे मतलब लड़की लड़के से बात कर ले तो लोग कत्ल कर देते हैं। हर एक माह के बाद कोई ना कोई भाई बहन को मार देता है। Over 1,000 women are killed every year for bringing dishonor on their families. This is the story of how one girl's murder shed light on an issue plaguing an entire nation. दोस्त नहीं बल वो जिगर। Pakistan is one of the world's leading Muslim nations. It aspires to be a modern democracy, but in many ways it remains a deeply conservative society. When these worlds collide, कनीर उठी नाचता ये कुछ ना कनीर ला बंदा नहीं आया ये हो गई है कपड़ा पाटी पे सफाई और पसीम वाला पाटी पे चिट्टा ये कसाफा मुंह तो लाए ये तो उठे झट्टी है पिछड़ हाल हाल इनको मैं आवाज़ दी थी बेली कंदील का नहीं कंदील ख़त्म थी लाती है। less than 24 hours after Qandeel's murder, Wasim is arrested. He readily confesses to killing his sister on live TV. गल्ला दबा दिया गल्ला पहले कोई चीज़ नशावर दी हाँ दी थी टैबलेट दी थी। Atiya Jafri is one of the few people who has spoken to Wasim since he was arrested. और मुझे देख के उसे यकीन हो गया था कि इसने किया होगा क्योंकि जिस इलाके का वो रहने वाला है वहाँ पे तो छोटी छोटी बातों पे मतलब लड़की लड़के से बात कर ले तो लोग कत्ल कर देते हैं। तो कंदील का तो ऑनर किलिंग आपको पता है इस साइड पे सबसे ज़्यादा है। तो उसने कहा जी मैं तो तंग आ गया था, बड़ा समझाया था कि ये काम छोड़ दो, नहीं छोड़ा तो फिर मेरे पास और कोई हल नहीं। Towards the end of his interrogation, Wasim seemed to show some remorse. उसे कहती थी कि तुम्हारा कैसे दिल किया होगा, तुम्हारी उम्र में 2-4 साल का फर्क था तुम्हारा, तुम एक जैसे बहन भाई थे, घर में खेले, मतलब सारी उम्र इकट्ठे रहे, तो तुम्हारा दिल नहीं ऐसे कांपा उसका गला दबाते हुए। तो उसके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। मुझे बड़ी ही तकलीफ महसूस होती थी बहुत। जब वो जाने लगा जुडिशल हम लोगों ने उसके 14 दिन रिमांड पूरा कर लिया, उस दिन मैंने उसे कहा, उसने कहा मैंने कहा तुझे अफसोस नहीं है क्या?
While shocking, Qandeel's murder is not unique in Pakistan. And Qandeel's home village is in an area notorious for violence against young women who are said to have brought dishonor on their community. In every house there is violence against women, whether it's a person's wife or a daughter, and that honor killings do take place all the time. Mukhtara Mai comes from the same region of South Punjab as Qandeel. In 2002, Mukhtara was gang raped by 14 men on the order of her local village council to settle an honor dispute. साथ रेप किया, फिर जब वापस आई तो मेरा कोई कपड़ा नहीं था। मेरे वालिद ने वही, इन्होंने कपड़े जो पीछे पहन के, जो बड़ी चादर मैंने पहनी होती, मेरे वालिद ने वही मुझे दी और मैं आ गई खामोशी से, घर ही आ गई। आई मैं 3 दिन बैठी रही और आए इलाके वाले लोग आए तो ऐसे देखें जैसे मैंने कुछ किया हो। In Pakistan, the victims of rape, rather than their attackers, are often accused of dishonoring their family. Many commit suicide, but Mukhtara fought back. देखिए वो उसी वक्त था जब मेरे साथ पढ़े लिखे लोग थे। मैंने उसी वक्त ये कहा, फैसला किया। मैंने कहा मरने से बेहतर इंसान कुछ करे, इंसान लड़े। मरना क्या है? मरने के लिए तो आसान है। मरना आसान है, मरना कोई मुश्किल नहीं है। जो काम मुश्किल है मैं उसको क्यों ना करूं? तो आप ये देखें, यहाँ पर किसी एनजीओ का नाम मैं नहीं जानती थी, मुझे नहीं था पता। किसी पुलिस वाले को मैंने नहीं देखा था अपनी ज़िंदगी में, किसी स्कूल को मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते अल्लाह का शुक्र है, अब सारी चीज़ें कर रहे हैं। कौन तालीम हासिल पूरी करेगा, ख़ासकर MBA MA इस तरह से कौन करेगा? ऐसे नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह वाला नहीं, इस तरह वाला, इस तरह वाला। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या बनोगी आप लोग? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं पढ़कर पायलट बनना चाहती हूँ। Mukhtara has also built a refuge for victims of rape and abuse. इसको इधर एक छोटी सी बिल्डिंग बना के तो अब हम आपको मिलवाते हैं। तो मेरा मियाँ जो था वो जुआ भी खेलता था, तो मैं भाई और रिश्तेदारों को बोलती थी भी ये गलत काम करता है, घर में खर्चा नहीं देता। तो वो बोलते हैं कि औरत को मर्द के खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। थाने पे गई, वहाँ से मेरी किसी ने नहीं सुनी। रिश्तेदारों में सब इकट्ठा हो गए, वो बोलने लगे कि औरत बुरी है। ये ऐसी कौम है क्योंकि हाँ ना से कत्ल कर देते हैं, तो शायद ये उसी टाइम ना भागती तो ये बेटियों समेत कत्ल हो चुकी होती। As these women's stories show, often these cases are ignored. But the high-profile nature of Qandeel's murder meant the police were forced to investigate. During his confession, Qandeel's brother Wasim seemed to suggest that the selfies with the cleric Mufti Qavi motivated him to kill. बहुत सारे मसले बने हुए हैं ना। कौन से? वो जो मौलवी का मसला बना हुआ है, हमारे घर मीडिया है। पहले तो ये मसला नहीं बना था ना, इसलिए मसला बना है कि हमने ये काम किया है। We met with Mufti Qavi at his home to ask him about his meeting with Qandeel and why he thinks she was killed. इसका माने ये क्योंकि मेरा अपना कमरा था, तो इस कमरे में होने की वजह से मैंने ऐनक उतारी या टोपी उतारी। जब मेरी टोपी पड़ी थी मेज़ पर, तो जब मैं आया आखिरी मेहमान को रवाना करके, तो उन्होंने टोपी पहनी हुई थी। तो मैंने ऐसे हैरानगी से भी देखा, तो मुझे कहते मुफ्ती साहब मैंने ये बरकत के लिए पहनी है, जो कि मेरे सर पे दुपट्टा नहीं था, तो मैंने उसको भी एक अच्छे उसमें लिया। फिर जब उठ के मेरे पास आके बैठी है बमार टोपी के, उस वक्त भी मैंने उनको कहा कि आप अखलाकियात के दायरे में रहें, तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, मैंने अपने फॉलोवर्स के लिए। But Qandeel's parents believe Mufti Qavi was embarrassed and angered by Qandeel's teasing video. तस्वीरां बार बार तस्वीरां आईयां, तो मुल्तान जड़न और से मेरे था मुरीद बहु है, तू ना बच से। और जले इन इंटरव्यू थिया ना था, मैं कुछ दसेंदी पी आदि पी अम्मी मैदाई में था झगड़ा मुफ्ती कवी नाल। बेटी हलाल कमेटी 2004 ओडे आने
इलाके का ताल्लुक हुआ। Did the online humiliation and his subsequent removal from his post on the religious council upset him and his followers? एक मौलाना साहब हैं, उनकी टोपी पहनकर उनके बारे में उसने ये गलत बात कही, ये गलत बात कही। अब वो ये कहते हैं कि एक आलिम दीन का चूँकि जनाब उसने मजाक उड़ाया है, एक आलिम दीन की उसने गुस्ताखी की है, तो हमने उस आलिम दीन की टोपी के एहतराम में ये काम कर दिया है। तो आप मुझे खुद बताएं। The police say Wasim was helped by 3 other men the night he killed Qandeel, and her family believe one of the 3, a man called Abdul Basit, has a connection to the Mufti. अब्दुल बासित और कवि ये एक दूसरे के क्लोज रिश्तेदार थे। मुफ्ती अब्दुल कवि का दादा जो है ना, वो इनके घर में रहता था, खतीब जामे मस्जिद था, उसने ज़िंदगी गुजारी शाहज़ादीन में। But the cleric is adamant he does not know Abdul Basit and had nothing to do with Qandeel's death. अब्दुल बासित जो है ना, अगर खुदा न खास्ता मैंने उसको कहा है, उसका कसूर यह है कि वो टैक्सी ड्राइवर है और उसको जब पता चला है कि इस तरह के कत्ल का मामला हुआ है तो वो खामोश रहा है। कि ख़ुद उन्होंने पूछा कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को तू जानता है? उसने कहा जी मैं नहीं जानता। तेरी कोई रिश्तेदारी है? उसने कहा मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं। The police say Mufti Kavi is not a suspect in the murder, but he remains a person of interest. A few months after Qandeel's death, her parents show us where she was murdered. ये था कि वालमाई में कंदील दा कपड़ा हटाए नहीं, कंदील तो कहे नहीं, कंदील दा मुंह सुजा पिया, कंदील दी जबान निकथी पी, कंदील दा हशर नशर थिया पिया। मैं उठाओ कने पीछे रड़न पाई गया, पिटन पाई गया। नाल वाली हम सही जरा सामने वाला गेट है वो आ गई है मेलो। और आदि अम्मा जी क्या थी गए, क्या थी गए? मैं दिया कंदील कहे नहीं, कंदील कोई मार गया। एक तो मेरी बेटी दोस्त रही, हर कने पहले बड़ी दोस्त नहीं, पर वो जिगर बेटी भी है, बेटा भी। In cases of honor killings in Pakistan, the murderer often walks free due to the tradition which allows the family to forgive the killer. In other words, Qandeel's father has the power to grant his son freedom. Qandeel Baloch's murder sent shockwaves through Pakistan. Such was the media attention. Her funeral was broadcast live on national television. Tradition dictates that only men can publicly display their grief. The gender equality that she fought for in her life was still not afforded to her in death. वो नुकसान होती बेटी तो नुकसान एक न बढ़ के मेरा करा थे। जेरी शहनशाह बेटी मेरी, मैं को मर्जी तम तक उठाना ना ली, बिलावा ना ली, जंग मेरी हूँ पावनी है, मेरी जिंदगी जो ऊँ करनी है, मौत तो खुदा देने, मेरी दुख सुख दी जामिन हुआ ही। बहुत ज़्यादा इसी खुशी में। Often the parents of honor victims forgive the killer in return for a compensation payment. But Qandeel's father is adamant that he wants justice for Qandeel, even though it will mean the loss of another child. बिल्कुल हो, क्यों ना हो? वो फांसी नहीं चल गई, उसको ये फांसी नहीं है बाबू। ये देखा गला दबा मारे, घुट्टी पे फांसी नहीं, ये क्या है? जा आके जी मैं बैठ रहा गया सामने जो टकुका है कि मैं गनी ही आई ये जो धोखा की थी क्यों की थी ये जो धोखा की थी क्यों की थी पर लादा ये बैठे ऐसा उठे हैं तू जान तेरा कम जाने रोंदा पिटे तो मैं कहना ना ये गल गलत है जी में खुदा की तरफों थी उम्र थी ये तो सब गुंडा नुकसान की थे सजा पे। Honor killings have continued since Qandeel's death. But her parents' insistence that her killer be held to account may yet make a difference.
Today, the police are submitting the evidence for Qandeel's case in front of a judge. कि जब तक कोई भाई फांसी नहीं चढ़ेगा उस वक्त ये कत्ल होते रहेंगे। बच्चे ये नौजवान जो है ना ये क्या सोचते हैं कि बहन को मार देंगे, माँ और बाप जो है ना ये हमारे हक में बयान दे देंगे। सरकार बनाम वसीम वगैरह, सरकार बनाम वसीम वगैरह। Safdar Shah is determined to see justice is carried out in Wasim's trial. मैंने ये केस इसलिए लिया है कि हमारे इलाके में हर 10 दिन के बाद, हर 1 माह के बाद कोई ना कोई भाई बहन को मार देता है। मैं ये चाहता हूँ, ये समझता हूँ इस सोच पे कि जब तक कोई भाई फांसी नहीं चढ़ेगा उस वक्त ये कत्ल होते रहेंगे। आज हम वो कंदील के वालिदैन हैं ना, उनके घर जा रहे हैं। उनके बारे में जो है ना वो केस के बारे में डिस्कस करनी है। मुकम्मल चालान पेश कर दें। अगर पुलिस मुकम्मल चालान पेश करके भेजती है तो फिर उसके बाद ट्रायल शुरू हो जाएगा। सबकी जब ये शर्तें पूरी हो जाएंगी तो मेरे ख्याल में कोई, मुझे लगता है 5-6 माह लग जाएंगे इस केस में। हाँ नहीं, पेरेंट्स से तो मैं कई दफ़ा मिली हूँ। हाँ जी, तो वो तो इस बात पे पहले तो थे कि भाई वसीम पे तो उनका था, उस बाबा जी कहते थे कि इसको तो फांसी होनी चाहिए, इसने बेटी को मार दिया है। ये उन्होंने हमें कितनी दफ़ा ये बात कही है। अब काफ़ी दिन हो गए हैं जब से ये केस हुआ है। 1-2 दफ़ा मैं उन्हें मिली ज़रूर हूँ, लेकिन इतनी डिटेल से अब बात नहीं हुई कि भाई उनसे, क्योंकि वो शायद सदरुद्दीन में होते हैं, यहाँ कम ही आते हैं। मुझे नहीं पता अब उनकी क्या हैं व्यूज़ हैं, चेंज हो गए हैं या हैं पहले वाले हैं, क्योंकि असर तो फिर उस पर पड़ता है ना जब आप फैमिली में होते हैं। बेटी मार गई है लेकिन बेटे तो जिंदा है ना। After Qandeel's death, Pakistan took steps to repeal the law that allowed perpetrators to be pardoned. The change in the legislation means that even if Qandeel's father changes his mind and decides to forgive Wasim, he will still face a mandatory sentence. Asma Jahangir thinks this marks a change in the government's attitude. The only significance is that this government has also now put their lot in behind supporting all movements that condemn honor killing. And it's a message to the judiciary that the government does not want them to look at honor killings kindly, because the judges are also prejudiced, and they used to feel that, and some of them still feel, that if a woman is killed because she really did provoke, then she deserved it. The recent amendment by this government, which is considered to be more or less a right-wing government, just sends a message to the judiciary to say, well, this is a crime and you better treat it seriously. To highlight the failure of the legal system to protect women, Mukhtara Mai is holding a press conference. She has brought with her 2 young girls who have been raped by rich landowners. जी सबसे ज़्यादा हाईलाइट करने वाली ये चीज़ है क्योंकि इन बच्चियों को इंसाफ मिले जिनके रेप से बच्चे पैदा हो गए। One of the girls comes on stage to describe how she had been warned to stay silent by her rapists. आपको कोई धमकियां तो नहीं मिल रही उनकी तरफ से? क्या कहते हैं? पिस्तौल दिखाते हैं। क्या कहते हैं कि भाई ये मार देंगे? The other young girl has been left so traumatized that she is unable to speak and collapses as she tries to leave the stage. और क्या जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ऑनर किलिंग बिल लेकर आई है, आप समझती हैं कि उससे कोई फर्क आने वाला है? देखिए, जब तक बिल तो काफ़ी सारे आते हैं, मैंने पहले जैसे अर्ज किया ना, लेकिन जिसके ऊपर अमल दरामद ना हो बिल किस काम का है? तो अमल दरामद ना होने की वजह से जो है ना ये सारे इतना हमारे तशद्दुद जो है ना बढ़ते जा रहे हैं। The Human Rights Commission of Pakistan reports that over 1,000 women were murdered in honor killings across the country last year.
have to change social ideas. You have to be able to challenge those social ideas. You have to be able to convince people that women are not in the ownership of a tribe or males, that they are independent human beings on their own, and to convince the courts that they are equal citizens on their own right. One striking feature in Qandeel's case is that the parents stood with her, and the parents took a very firm stand against their own son. That does not happen in most of the cases, large number of them. Qandeel's life was brutally cut short, and we have yet to learn what the outcome of her trial will be. What is clear is that she was a polarizing force in Pakistan. Just before she died, she was also about to be given a big opportunity that may have turned her fortunes around. Mak Khan remembers speaking to her the night before she died. तो फिर मुझे जब लास्ट इसने कॉल की कि बड़ी खुश थी, तो मैंने कहा क्या कहती, मुझे अपना जो टारगेट जो मैं अचीव करना चाहती थी ना, वो मुझे मिल रहा है. मैं कहा अच्छा, कहती नहीं पहले मुझसे वादा करो कि तुम मेरे साथ होगे. Qandeel had been invited to appear as a host on a major TV award show in Karachi, and she wanted Mak Khan to go with her. तो मैं बड़ा खुश हुआ, तो ये भी बहुत खुश थी. तो कहती बस सुबह जो है ना, मैंने अब जाना है तो तुम मुझे सुबह उठा देना. तो मैंने जब वो सुबह इसको बैल देता रहा, जाती रही, तो उठाई नहीं. तो सामने टीवी पे देखा कि इसकी डेथ हुई है. तो मैं तो वहीं फिर सख्ते में आके बिल्कुल हो गया. मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि हुआ कि पहले तो मैं झूठ समझता रहा. अल्लाह, ये भी सूट है कंदील का. ये शर्ट है कंदील की. कंदील में तेरी केरी केरी शायद निकाला. कंदील मेरी बच्ची, कंदील में तेरा जहेज निकले निकलिया. कंदील कंदील अपने कपड़े अनपा. कंदील कंदील ने कपड़े चुमदी रहेगी. क्या है सर? बस मैं तो शक्ल देख देख के इतना खुश थी ना, मैं इतना खुश, क्या मेरे को फोन बजे. मैं कोई दुनिया तो नहीं देखती कंदील जी, बस मैं कोई दुनिया तो नहीं देखती कंदील जी, मेरे को नहीं देखती. But Qandeel's real legacy may be felt after her death. There is now hope that her case has sparked a change in Pakistan. Qandeel was hope because she was so full of life. I just felt she represented this change in Pakistan where anybody can just use whatever medium they have and then be what they want to be. It brought out the whole discussion whether a woman who is provocative deserves to be killed or not deserve to be killed. Well, you may not agree with her, but you certainly cannot kill her. And people began to recognize the fact that you can't go to these extremes at all. Her mother makes the short journey to her grave every week. It remains unmarked. A modest memorial for a woman who lived her life in the public eye. या अल्लाह मेरी बच्ची को माफ कर देना. अल्लाह या अल्लाह गुनाह माफ. मेरी बच्ची को माफ कर देना. However the world chooses to remember Qandeel Baloch, social media star, singer, depraved or defiant, she has put the spotlight on the abuse women experience in traditional Pakistan. And for them, her bold attitude will live on as a symbol of hope.